Hello friends and thanks for joining me. You are watching YouTube channel IELTS Coaching और मैं आपको बताने जा रहा हूँ something very important and it is related to the exam Duolingo. थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने उसके बेसिक्स के बारे में बताया था. Here is the link of that video जिसे आप देख सकते हैं. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था about Duolingo exam कि ये एग्जाम क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन टाइप रहते हैं and everything. In that video, I mentioned that Duolingo website contains the list of the universities and colleges that accept this test, though majority is from America and other parts of the world. But obviously, lockdown की वजह से क्योंकि IELTS and TOEFL exams नहीं हो पा रहे हैं, so more and more universities are going to accept Duolingo. बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो Duolingo एक्सेप्ट कर रहे हैं वो साथ के साथ आपसे IELTS रिक्वायरमेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं. सो some are giving you admission on the basis of IELTS, some on the basis of both IELTS and Duolingo, while the rest may give you the admission on the basis of only Duolingo exam. Now, if you still wish to continue and go ahead with that, once get onto the website of Duolingo. वहां पर आपको लिंक मिलेगा who accepts the Duolingo exam. उसमें approximately 800 plus institutions के नेम हैं. आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसका नेम सर्च कीजिए. सर्च करने के बाद फिगर आउट कीजिए कि उसकी बैंड रिक्वायरमेंट क्या है. आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वहां पर सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के डायरेक्ट लिंक्स हैं, ईमेल्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए. वेरीफाई होने के बाद that Duolingo can help you to get admission in that college. Go ahead and take the Duolingo test. Make sure that this test is conducted on a computer, not on mobile device. So obviously students जो ये exam देना चाहते हैं but they do not have access to computer or laptop, I'm going to launch the लॉकडाउन सीरीज, जिसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से घर पर बैठे हुए हैं and they are not able to practice IELTS, I'm going to help you out. So to help you spend the next 2 weeks positively and prudently, I have started this course. मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट हर एक मॉड्यूल का ध्यान रखा है. इस कोर्स को डेफिनेटली आप अभी परचेज कर सकते हो. इसके लिए आपको IELTS कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर, Apple users को ClassPlus application download करनी है, then they have to enter the ORG code which would be IELTS. Once you are at the home screen, you need to click on the store option जहां पर मेरे सारे courses available हैं, and there you will find this IELTS lockdown series. ये कोर्स आपको परचेज करना है, अवेलेबल है एट ओनली 1000 रुपीज. हमारे इस एप्लीकेशन पे एक और ऑप्शन रहेगा. जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनका एक चैट ग्रुप बनेगा and you will be able to talk to each other. You will be able to chat with each other. And here I really appreciate the students to find partners for one-on-one interaction. यहाँ पर आप अपने एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट शेयर कर सकते हैं. Then यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक कॉल्स पे स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे. This course is really going to help you, the novice students, the beginners, as well as those who already have the experience of IELTS. It will really help you to remain in touch with your. They really cannot take the Duolingo exam. So this is pretty much all that I had to share with you guys in this video. So as soon as I have any other update related to this exam, I will get back and inform you. Stay tuned and I'll keep on helping you guys as much as I can. Take care of yourself. Bye-bye.